ये टूर्नामेंट हर जगह पे करवा रहा है और इसी के दौरान बांडीपुरा में भी हमने किया और राजा अनवर साहब का यादों में हमको आगे ए पीसफुल बैटन ए पीसनेस के लिए हम क्या करना है। हर बंदा कोऑपरेट कर रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है। इसका रिमेम्बरेंस के लिए हमने ये टूर्नामेंट करवाया और इतना सारे लोग टीम्स इधर पार्टिसिपेट किया और आज फाइनल्स वन टीम फाइनली गॉट थ्रू। Life is all about winning and losing, but at the same time the sportsman spirit continues. Or so is we try to establish peace through CAP programs. ये खुशी की बात है, इतना लोग इधर आ गया, इधर मौजूद हो गया। आजकल माहौल ये पीसफुल एस्टैब्लिश करने के लिए एक संकेत है। Thank you. Sir, apart from the supports, how is the security scenario around North Kashmir? The security scenario आपको पता है, we are monitoring very carefully and I don't think so there is any untoward incident will happen. We have made a full security and the utmost peace is there. At the same time, we are on our toes to guard the entire borders and we try to establish peace as far as possible. So since there have been some recent infiltration attempts in North Kashmir also, has there been a change in some security situations, or have you tightened the nose around there? Yeah. We are continuously following the movements of the militants and by God's grace we'll come to know the good news in future. Sir, any info about how many militants? Sorry? How many militants are active in North Kashmir? There are telltale signs, but the confirmed thing I cannot give you right now.